Guys, welcome back. So today in this lecture we discuss how to use repeater components in a screen flow. So without wasting any time, I'm going to my setup object, and in the setup objects in the quick find bot I search a flow. Okay, yeah, flow, and I click on this flow. Okay, go to new flow. Okay, start from scratch, click next and click create. Okay, so here the plus component, then you can drag the interaction component, that is click on this screen flow. After this, in the component section, search repeater. Here the repeater component, just select this, drag the component in the here and label name as repeater 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 component. Okay, component. Okay, repeater. Okay, repeater component, and in this I name as, let's say I have taken an example in the lead object. Okay, so in the lead, what was the main required field? What was the required field in the lead object? That is name and the company. Okay, so I take the last name. Sorry, I taste a text. So I taste a text with sorry, it's a display text. I take the text where it is like last name. Okay, it is like last name, and mark field as required is equal to true. Okay, read only default value disabled, where it is, yeah, required. Okay, required is equal to true. After this, the next text field, it's a company. Okay, company, and make it required. And I want also the number field, that is phone number, phone. Okay, and the last one is email. Okay, I also take the email, just drag this component to here and email. Okay, so placeholder, okay, required is equal to true. Okay, okay, so this is how you can add the repeater component, that is first name, last name, company, phone number and email. Okay, yeah, I think this is all about done. And configure filter, and you can configure your filter by clicking on this and hide previous, hide pause, and also use a custom label to save. Okay, to save the record, click done. After this, when the user inputs some records or over the repeater combo over the screen flow, then it should be create a record to the create record in lead. Okay, okay, from a record variable it is set to manually, and search object which wherever you want to create a record, that is your lead object. To search the lead object, click on this and company last name, map the value to the last name, where it is, yeah. Okay, lead, wait a second bro. Oh, company, find the define repeater component, last name. Okay, before this, make a loop. I think repeater component loop, all items, loop through records. Okay, and just delete the element. After this, create record
that is set to manually. Lead object and okay, company should be your current item, last name company, okay, create records in lead. Okay, leads. I made a mistake over there where I didn't use the loop also, because it will be more than one variable. That's why I made it. Last name should be current item load, that is last name, and email should be current item from email value, and the last one is phone number. Phone number should be current item from phone. Yeah, this is phone. Okay, this is how you can set a record. Click save. Repeater, name it as repeater. Component by screen flow. Okay, repeater component by screen flow. Repeater component by screen flow, and just activate this. What I do for this, I do firstly मैंने एक स्क्रीन फ्लो है, उसके अंदर रिपीटेटर कंपोनेंट है, फिर लीड की जितनी भी मैंडेटरी डिटेल्स है वो डाली। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया। लूप चलाने के जितने भी उस लूपिंग में आए वैल्यू, सपोज यूज़र ने 2 बार डाली वैल्यू, सिलेक्ट ऐड करके 2 सेक्शन बनाए। मैं अभी दिखाता हूँ उसको डेमो। जब वो सेव करेगा तो वो रिकॉर्ड्स लूप में जाएगा, एंड उसके बाद जो रिकॉर्ड्स जितने भी यूज़र ने इनपुट किए होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाएगा। लेट्स टेक अ क्विक डेमोन्स्ट्रेशन सो दैट you can easily understand why I'm making this loop. Okay, go to edit. In the home tab, I go to edit page and just add the component which I recently created, that is flow, and drag this component here, whichever you want, and just repeater component by screen per select, and just save it. Okay, go back and check whether it's been attached. Yeah, it's been attached. Okay, so here the plus add button and the remove button. When you want to remove, no components are there. When you click plus, then it will be this, and when you want one more details to be add, just click add button. This replica will be copied from next. Okay, so want just like name is equal to Abhi Shake test 1 and company XYZ phone 10. Okay, and abc@gmail.com, and another record I want also creation, so that Abhishek test 2 company ABC phone everything thus. Okay, and email abc@gmail.com. सो रिपीटेड कंपोनेंट कब यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये समझो। इसको यूज़ करने का सबसे बेसिक तरीका, क्योंकि अगर सपोज कर लो किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया और अगर मैं रिपीटेड कंपोनेंट ना यूज़ कर सिर्फ सिंपल फॉर्म बनाता हूँ, सेव करता हूँ, तो एक बार में एक ही रिकॉर्ड जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा रिकॉर्ड कर। सपोज ऐसे उसके पास 10 रिकॉर्ड है, और वो 10 रिकॉर्ड को सपोज कुछ डेटा में उसके पास 10 एक्सेल में 10 लोगों का नाम है, लास्ट नेम, कंपनी, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, और वो बार बार जाएगा, बनाएगा, सेव करेगा, फिर जाएगा, फिर बनाएगा, फिर सेव करेगा, फिर जाएगा, फिर बनाएगा, फिर ऐसे 10 बार को काम करना पड़ेगा। तो बार बार क्या करना, उसको सेव बटन दबाना रहा। तो एक बार में उसने क्या किया कि 10 इसने सपोज को उसके एक्सेल में 10 डेटा, उसे सिर्फ ऐड बटन करता रहा, एंड उसके सारे फॉर्म को कॉपी हो दे रहे। जैसे अभिषेक टेस्ट 1 टेस्ट 2, फिर एक बटन खुल गया, इसमें तीसरा डेटा डालेगा, फिर ऐड करेगा, फिर चौथा डेटा डालेगा। ऐसे क्या होगा कि एक बार में सारे डेटा उसने डाल दिया, एंड देन डेटा डालने के बाद उसने क्या किया, सिर्फ सेव बटन किया। सेव बटन करेगा तो उसके अभिषेक टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, जैसे मेरे पास 2 डेटा है, मैंने 2 डेटा का टेस्ट करने के लिए डाला, मैंने सेव किया, मेरे डेटा सेव हो गए। ठीक है,
मेरे डेटा सेव हो गए। जब मैं चेक किया मेरे डेटा बने कि नहीं, जब मैं लीड्स ऑब्जेक्ट में गया एंड सी अभिषेक टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 दोनों बने मेरे, अभी जस्ट मैंने बनाया abc@gmail.com, abc@. सो abc company xyz and abc. So this is how you can make that's like क्या अपने टाइम को कैसे सेव कर सकें. ओके, so I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future updates. Thank you guys. And if you have any comments and query, please write down in the comment section. Thank you.